The air quality in the capital has been ranging from between severe and very poor for the last several weeks now. The stubble burning season is well and truly over. So what is making the capital choke? India Today's special investigation team has unraveled a dirty paisa pollution nexus, leaving Supreme Court guidelines and bans up in smoke. We're about to reveal what many don't want should emerge in the public domain. Our reporters were offered bribes. They were told, we'll do what it takes, take what you want, don't roll your cameras. But that is exactly what Nitin Jain and Hizbullah did. Here is an India Today special investigation on the pollution predators. Pollution-choked Delhi, gasping for breath amid smoke and toxic haze. The capital looks at the Supreme Court mandated construction curbs as the last resort to ensure the right to clean air. But not far from India's top court, in Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's own constituency, and just a stone's throw from the offices of the Commissioner of Air Quality and Delhi Pollution Board, these villains of Delhi's air operate with impunity. These images of open violation got on our cameras will stun you. On camera, open violation of the order of the Supreme Court, which mandates sweeping restrictions on construction activities in the capital. But in the dead of night, digging work and metro construction is stealthily proceeding as usual. Transportation officials and police are allowing polluting diesel trucks to enter Delhi after being bribed despite not being allowed. Right under the nose of the enforcement agencies. Digging work openly going on in the dead of night. Diesel trucks lining up, earth movers, drilling machines and generators working at full swing under bright halogen lights. The contract for this work is with NBCC India, awarded by the Ministry of Housing and Urban Affairs. NKG Infrastructure is overseeing construction of colonies. The ongoing work is an open breach of the top court's no construction order, but officials are in denial. कहाँ साहब ये क्या चल रहा है? चल रहा है सर, वो अपना है, बंद ही है सर, कहाँ चल रहा है? बंद है। बंद है ना ये? हाँ जी सर। इसकी परमिशन है आपके पास जो कर रहे थे अभी आप? एक्सप्रेशन का हमारा पहले परमिशन आया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन बंद है, हमारा जो एक्सकेवेशन बंद है, सब बंद है, और ये ट्रक भी डीजल के हैं। वीडियो तो रहने दीजिए, वीडियो क्या बना करेंगे? हम लोग को आई थी परमिशन, ऐसा नहीं है। तो परमिशन थी तो फिर आप काम चलवाइए, क्यों रुकवा रखा है? The anti-smoke guns and anti-pollution instruction boards were witnessing the mockery of this top court order. And shockingly, our team was even offered a bribe to turn off the cameras and walk away. नहीं सर, आपको मैनेज तो करना पड़ेगा उसमें। Our investigative team followed this concrete truck, which stopped near the metro construction site. The entire area was teeming with digging activity. Metro pillars were being filled with concrete, being poured from trucks, emitting noxious black fumes. Generator sets were running, but the workers abruptly stopped on seeing our camera team. Laborers were quickly moved away. The site engineer first tried to evade, but eventually admitted to this open breach.
आप मान रहे हैं कि ये काम चल रहा है? उस चीज़ के लिए मैं ना नहीं कर सकता ना सर, अभी काम जब दिख रहा है। ये आरएमसी के ट्रक्स आए हुए हैं जी, कंक्रीट आप डाल रहे हैं जी, और वहाँ पे वो पाइलिंग की मशीन चल रही है। इंजन स्टार्ट नहीं है ना मशीन का, मेंटेनेंस हमारे सामने चल रहा था जी सर, अभी चालू था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हमने उससे पूछा, जो मशीन पे काम कर रहा था उसने बताया कि जी ये 7 बजे से चल रही है। ये भी मशीन मेरे ख्याल से डीजल से है जी, और वो आगे जो वो आरएमसी के ट्रक्स वो भी डीजल से है जी, और वो आपकी साइड से आरएमसी यानी कंक्रीट रेडी मिक्सचर कंक्रीट ऊपर के लाए हैं जी। ये कब मशीन कब तक चलती रहेगी? ये माल है, इसके अंदर घंटे 2 घंटे का समय रहेगा। जब तक ये मशीन तब तक चलती रहेगी जब तक ये डलेगा नहीं? हाँ। ये माल कहाँ से लाए हो आप? ये मेट्रो से लाया, अंदर वजीराबाद जंगल में प्लांट लगा है ना जो, वहाँ से। कब दिन में कितने चक्कर लग जाते हैं? दिन में नहीं चलता, दिन में 1 आध चक्कर लगता है। रात में? रात में तो 2-3 हो जाते हैं। These polluting diesel trucks lining up at the Delhi-Noida border are strictly banned from entry into the capital by none less than the Supreme Court. But the drivers say both Delhi and Noida police look away if their palms are greased with bribes. This massive diesel truck was stopped by the police while trying to cross the border into Delhi. Just see what happens next. क्या हो गया? ये एंट्री मांग रहे हैं सर, इस बात की बॉर्डर पे ऐसे पास करने। 500 रुपये मांग रहे हैं? किसने मांगे? इन्होंने सबने मांगे। सर हमें खाली रोकने का आदेश है डीजल गाड़ियों को, और उनको हमने खड़े कर रखा है। वो तो कह रहा है पैसे मांग रहे हैं। किससे? हमारी कोई बात ही नहीं उनसे, ऐसे कैसे हो जाएगी? ले तो ये जो ट्रक है, ये जो सीएनजी का ट्रक आप कह रहे हैं, हाँ ये जा सकते हैं। ये मटेरियल ला सकते हैं कंस्ट्रक्शन का? नहीं सर, हमें आदेश है डीजल की गाड़ियाँ रोकने को। You may applaud the Delhi police on duty, thinking they've acted with honesty, but your perception will change when you see the same truck inside Delhi at the Sarita Vihar locality. हाँ 500 रुपये दिए मैंने। 500 रुपये दे दिए? और क्या बोला उसने? कुछ बोला तुमको? कुछ नहीं बोला फिर। कुछ नहीं बोला? ट्रैफिक नहीं लेते? नहीं, ट्रैफिक वाले ने। When we confronted the police asking what happened to the truck that they had stopped, we're given blatant lies in reply. यहाँ से घुमाया मैंने। मैं आपको विजुअल दिखा दूँ? बिल्कुल दिखा दो आप, यहाँ से निकलता हुआ दिखा दो आप मुझे। सामने से यहाँ से निकला तो बताओ। यहाँ से नहीं निकला, इस रोड से नहीं निकला। ये 2 रोड एंट्री की हैं दिल्ली की, इन दोनों रोडों से ही नहीं निकला। फिर वो दिल्ली की सड़कों पे कैसे दौड़ रहा है? कहाँ है? कहाँ है? हाँ हमने उसको अभी पकड़ा है सर, वो किसी रोंग साइड से कहीं से आ जाए था, उसका देखो आप भी जानते हो। बोला कि मैंने जी 500 रुपए दिए हैं। किसको? पुलिस वाले को। बात को साबित कर दो आप कहीं पे भी। हमें किसी से कोई कुछ किसी तरह की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा। सही आपके सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहीं पे खड़ा हुई मैं आपसे उससे बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे उसे वापस भेजने की। Apart from Delhi police officials, we found an enforcement team of the Delhi Transport Department making quick money by playing havoc with Delhi's pollution fight. Only to scoot when caught in the act by our special investigation team. But in Faridabad, adjoining Delhi, crusher dust used in construction is being openly sold from massive piles. Upon inquiry, the manager of this outlet even agreed to sell us his dust. ये क्या भाव है? 1180 रुपये टन। 1180 रुपये टन भर के दे दोगे आप अपनी मशीन से? हाँ भर के दे दो। तो 1180 रुपये टन आप बता रहे हो, इसमें आएगा इसका ये मशीन का भरने का शामिल है? ना उसमें शामिल है, भरने का शामिल है। इसका बिल दे दोगे भाई साहब? बिल नहीं मिलेगा। बिल नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या हमारा एक ना सरकारी काम है, नाली का काम है, नाले का रुका पड़ा है बड़ी मुश्किल से, और वो क्या है कि काम वाम बंद है, बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ यहाँ से निकलने में कोई दिक्कत नहीं है? दिल्ली जाने में कोई दिक्कत? तो रास्ते में पुलिस वाला कोई नहीं। Trucks carrying building material were also caught on camera entering Delhi despite a complete ban. क्या ला रहे हो? ईंट है सर। कहाँ से ला रहे हो? ये ला रहे शामली से। कहाँ ले जा रहे हो? ये मालवीय नगर। मालवीय नगर? तो कोई रोक नहीं रहा है तुमको? नहीं कोई नहीं रोक रहा सर, खुला पड़ा बॉर्डर। ऐसे आराम से एमसीडी का टोल वोल देके सवार हो? एमसीडी का टोल वगैरह देकर? टोल वोल वगैरह सब लगा हुआ सर।
नहीं वो तो लगा हुआ है, कोई नहीं रोक रहा है तुमको नहीं। लाने से, बिल्डिंग मटेरियल ला रहे हो। नहीं सर। 2 nights on Delhi roads, exposing the biggest ever betrayal of Delhiites and their right to breathe clean air. And an open dare to India's topmost court. With Mohammad Hizbullah and Nitin Jain, this is India Today's special investigation team. This is an eye-opening investigation because this is when pollution levels are still severe. You've got the Delhi government here, you've got the Delhi police, you've got the central government, you've got pollution control boards, you've got the MCD, a multitude of agencies responsible for ensuring that the government and the Supreme Court's pollution guidelines are not broken. But as this India Today special investigation showed, blatant violation of Supreme Court guidelines. I'm joined by my colleague Nitin Jain, who led our investigation efforts. Nitin, a cracker of a story. So first and foremost, congratulations. Thank you. And very well done. We're proud of what you've done. For reactions on this investigation, I'm joined from the Aam Aadmi Party government in the capital by Reena Gupta, an advisor to the Delhi government. With us on this broadcast is Vijender Gupta. He's one of the few members of the BJP who are a part of the current Delhi Assembly. We have T.R. Kakkar, former Commissioner of the Delhi Police, a well-known police officer, and Jyoti Pandey Lavakare is an environmental activist, author of Breathing Here is Injurious to Your Health, and co-founder of Care for Air. नितिन, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि कानून फिलहाल क्या है, जो चीज़ें हमने अभी कैमरे पे देखी, उनमें से कितनी चीज़ें किन कानून का वायलेशन है और किस एजेंसी की जिम्मेदारी है ये इंश्योर करना कि इस तरह से दिल्ली में रात में कंस्ट्रक्शन ना हो क्योंकि पोल्यूशन गाइडलाइंस है। दिल्ली की जिस तरीके से आबो हवा जहरीली हो गई थी, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी उन पर बैन लगा दिया था। टोटल कवर बैन था, कोई किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई डीजल की गाड़ी अंदर नहीं आएगी, सिर्फ वो गाड़ी अंदर आएंगी, दिल्ली में एंट्री होगी जो सीएनजी हो या किसी जिसमें एसेंशियल गुड्स हो। लेकिन हमने जब 2 रात हमने जब सड़क पे बिताए तो हमने देखा कि किस तरीके से पैसा देकर डीजल के ट्रक दिल्ली के अंदर आ रहे थे, दिल्ली से और जगह जा रहे थे, सरेआम हो रहा था। और उसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी इन्वॉल्व थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट के लोग भी इन्वॉल्व थे और तमाम लोग इन्वॉल्व थे और सब कुछ सरेआम सबको पता था। ट्रक वाले इतने कॉन्फिडेंट थे कि 500 रुपये देंगे और अब ये 5 मिनट में हमें जाने देगा, और ये हुआ भी। हमने जब इस बारे में पूछा तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब बहाने कर रहे। तो ये तो एक बात है। बाकी जो नई दिल्ली में नेताजी नगर में जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिस तरह की माइनिंग हो रही थी, एक्सकेवेशन हो रहा था, वो अपने आप में सरप्राइजिंग था। मैं जब जाके अपने सोर्स के साथ वहाँ खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि करीब 70-80 एकड़ में एक साथ 200 ट्रक्स खड़े हैं और उन सबको भरा जा रहा है। 50-50 फीट 40-40 फीट उनकी डिगिंग हो रही है। और क्या बना रहे हैं ये लोग? ये वहाँ पे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बना रहे हैं जो एनबीसीसी को जिसका ठेका दिया, और एनबीसीसी ने आगे तो सरकारी गवर्नमेंट है, सरकारी एजेंसी है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ये अर्बन एंड अफेयर्स का, हाउसिंग अफेयर्स की। और वही लोग तोड़ रहे नियम। ये जो तोड़ रहे हैं, ये आगे जो कंस्ट्रक्शन जिसको ठेका दिया है वो लोग तोड़ रहे हैं। और उन्होंने आपको घूस भी दी, ब्राइब भी ऑफर की? बहुत भारी ऑफर किया। उसने बोला कि इसको कैमरे को बंद कर दो, हमारी मैनेजमेंट से बात हो गई है, आप जो कहोगे वो हो जाएगा। और 200 ट्रक्स इन नेताजी नगर, सारे डीजल ऑपरेटेड, और ट्रक्स नहीं, वो ट्रोलास हैं, 12 टायर 16 टायर ट्रक्स, कोई घुस नहीं सकता। और इतना पोल्यूशन था, हर जगह मट्टी, कुछ नहीं। और जितनी गाइडलाइंस है डीपीसीसी की, कोई गाइडलाइंस वहाँ पे कोई भी गाइडेंस को देख नहीं रहा था। जब हमने वहाँ के जो साइट इंजीनियर्स को कन्फ्रंट किया पहले, तो उसने बोला कि कुछ नहीं, देख लीजिए साहब, यहाँ पे सब बंद है। मैंने उसको बोला कि हमारे पास सारे आपकी साइट के चलते हुए विजुअल है, तो उसने बोला कि हमारे पास परमिशन है। मैंने कहा आपके पास परमिशन है तो आप चला लीजिए, आप क्यों बंद कर रहे हैं, आपको किस बात का डर है? This is the guy who offered the bribe. Yeah, sir. This was the. This is shocking because you've got the central government sitting right here. Just a couple of kilometers away are some of the most important government offices. You've got the Delhi government there. This is in the Chief Minister's own constituency. I want to go to Reena Gupta first as the representative of the Aam Aadmi Party government and a party that claims to be very particular about pollution management. Ma'am, on your watch, in your Chief Minister's own constituency, up to 200 trucks
working through the night, violating Supreme Court guidelines. How do you justify and explain to every horrified person who's watching at this moment what in the world is going on? So Rahul, one has to understand that air pollution is a problem of, it's a problem that cuts across administrative boundaries. So like in this case, there are several agencies responsible. It's the MCD, it's the Delhi Police, it's the Delhi Pollution Control Committee. And the point that I'm trying to make, Rahul, is that as a country, we need to decide whether we are serious about air pollution or not. That's a rhetorical answer. Reena, that's a rhetorical answer, means nothing. Forget the agencies that... Ma'am, listen, you will listen to my question and then answer. Forget the agencies that don't report to you. I'll ask Vijender Gupta that question separately. Of all the government agencies, including the Delhi Pollution Control Board, which report to your government, to your party, to the Delhi Chief Minister, why are you sleeping at night? What Nitin did in the India Today investigation team, which is go out at night, see what's happening. Why can't you guys do that? Rahul, we are doing that. We are doing that. And the How many Central people Air have you Quality found Commission so far has actually breaking the law? How many people have you found violating Supreme Court guidelines? How much action have you taken in the last several weeks? Give me a report. Yeah, only if you allow me to speak, Rahul. I don't know why you've called me if you're not interested in listening to what I'm saying. So Delhi government is the only government that is actually taking action. This is what the Central Air Quality Commission has said on record in an affidavit in Supreme Court, Rahul. But you have to understand that stopping construction does not just come under DPCC. MCD is responsible. Now, I cannot comment on this particular site because I do not know whether it comes under MCD or it comes under DPCC or it comes under some other agency. So there is a multiplicity of agencies in Delhi. So no matter what the Supreme Court says, what the Delhi government says, unless you have a unified body, a unified system of tackling air pollution, we will continue to have this problem. Every year the Supreme Court passes some orders. These are all ad hoc orders. Look at the way they've shut down polluting thermal power plants right now in and around Delhi. Ma'am, you're giving me a roundabout answer to a very direct question. In the last several weeks, how many officials, ministers, chief ministers, secretaries from the Aam Aadmi Party government in Delhi have gone out at night to see whether the rules that you claim to believe are important are being enforced? Answer just this specific question. So Rahul, there have been at least 2,000 inspections. And there have been several raids. Hundreds of crores have been, sites have been fined because they were violating orders. We've set up a 24/7 green war room where you and I can report all of these violations on pollution. So there is a Green Delhi app. You can actually report these violations on the app. So Delhi government is the only government that is actually taking concrete actions, Rahul. Ma'am, then how are 200 trucks coming to one site and violating rules in this open fashion, if you're so vigilant at night? Rahul, you need to get your facts correct. Firstly, the entry into Delhi, the entry points are under MCD, and they were supposed to install RFIDs in these entry points, which they haven't done. So there are Supreme Court orders, there are NGT orders that these polluting trucks should not be entering Delhi year-round, not only during the pollution season. Year-round, these polluting trucks are not supposed to enter Delhi, but they always manage to bribe and actually enter Delhi. So the point I'm trying to make is that, in fact, the onus is on the media actually to reveal all of this. How air pollution continues to be a problem. You don't want to do your job. You're putting the entire onus on us, but I'll park you for the moment because Vijender Gupta, ये तमाम केंद्रीय दफ्तरों के 1-2 किलोमीटर के इलाके में आता है. MCD आपकी पार्टी चलाती है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, वहां पे भी आपकी पार्टी इंचार्ज है. ये आपकी नाक के नीचे रात में क्या हो रहा है? आप लोग क्यों सो रहे हैं? देखिए राहुल, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं और ब्लेम गेम करते हैं. दूसरा, हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टी कौन है? दिल्ली गवर्नमेंट. एफिडेविट किसने दिया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने. दिल्ली गवर्नमेंट ने कोर्ट को मिसगाइड किया है, मिसलीड किया. आपकी जो स्टोरी है वो साफ बताती है कि गवर्नमेंट कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट को कह रही है
कि सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद है, जबकि आपने दिखाया कि सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन है। नहीं तो सर एमसीडी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, ये हमारी जिम्मेदारी क्यों है रात में जाके देखना कि वहां पे इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, आपके जो लोग यहाँ पे बैठे हैं दिल्ली में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्यों सो रहे हैं, ये बताइए मुझे आप। एफिडेविट कौन दे रहा है सर? एफिडेविट तो कोर्ट में हो रहा है ना, जमीन पे पुलिस किसको रिपोर्ट करती है, एमसीडी किसको रिपोर्ट करती है, उसका जवाब दीजिए आप मुझे। सामने मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एयर पोल्यूशन को लेकर के या दिल्ली की जो भी हालात है उसको सुधारने की या उसको ठीक करने की, एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूटेड जो कुछ भी है बैन है। अभी कोर्ट के सामने एफिडेविट दिया गया कि हमने स्कूल बंद कर दिए और उसके बाद कोर्ट को के ऑर्डर को वायलेशन हुआ, कोर्ट अरे विजेंदर जी जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका आप जवाब क्यों नहीं देते? अगर दिल्ली में ये डीजल ट्रकों की एंट्री हो रही है, अगर वो कह रहा है कि मैं पुलिस वाले को 500 रुपए दे के अंदर आया, अगर वहां पे एमसीडी की निगरानी होनी चाहिए, रात में आपके छापे होने चाहिए, आपके लोग अपनी कंबल में बैठ के रजाई में बैठ के सो क्यों रहे, काम क्यों नहीं कर रहे अपना? ये देखिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं बॉर्डर से अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो ये नहीं आप कह सकते कि एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहां लिखा है कि एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है? तो हाँ, पुलिस कांस्टेबल ने जो किया है, पुलिस कांस्टेबल ने जो किया है वो सामने है और दिखाई दे रहा है, वो गलत है। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी को ब्लेम कर देगी, किसी थर्ड एजेंसी को कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देगी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इस सब को रोकने के लिए किया क्या है? जाकर के किसी के चालान काटे। आज इंडिया टुडे की टीम अगर गई है तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट गया वहां? सवाल यह है कि आप जब पॉल्यूशन कम हो जाएगा तो आप कहेंगे हमने कर दिया, जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसने किया, उसने किया, उसने जो दारोमदार है वो आपकी सरकार पे डाल रहे हैं। बॉस चार्जेस लिए 2000 करोड़ रुपए। जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, नेताजी सब मेरी बात सुनिए, जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वो एक सरकारी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को आउटसोर्स किया है, वो सरकारी बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये कोई टाटा बिरला अंबानी की कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है सर, सरकारी कंपनी नहीं है सर ये प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट का है ना सर। मैं देखिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट का है, उसको आउटसोर्स किया गया है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को। कौन करेगा? वो अगर ए एजेंसी गलत काम कर रही है तो उसको चेक करने का राइट किसके पास है? उसके ऊपर अभी इशू तो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी है इस सब पर एक्शन लेने की, उन्होंने लिया क्यों नहीं? सर वो भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है। एक दूसरे वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम कर रहे हो, मर हम लोग रहे हैं, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम कर रहे हो। नहीं, मर तो हम सब रहे हैं, मर हम सब रहे हैं, आप और मैं, सवाल मेरा ही आपका नहीं है, हम सब उसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात यह है कि 1500 करोड़ रुपया इन्होंने कॉम्पनसेशन चार्जेस लिए हैं, एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्जेस, वो गए कहां? दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए, दिल्ली में फ्रेश एयर आए, इसके लिए 3000 लोग हर साल दिल्ली में मर रहे हैं पॉल्यूशन के कारण, हर रोज 8 लोगों की डेथ। Can I come in, Rahul? क्या दिल्ली की गवर्नमेंट ने कोई फॉर्मेट बनाया है राउंड द ईयर दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए? TR Kakkar, as former commissioner of the Delhi police, how do you respond, sir, to the fact that the cops on duty at night are taking money, the people bringing the trucks in saying, "Ji, हमने तो पुलिस वाले को 500 रुपए दिया, हम आ गए, no problem," and the cops seem to be oblivious of this. Secondly, given the fact that there is a multitude of agencies involved, who is responsible for letting this supreme violation take place? See, you have shown on the camera the conversation that has taken place between the cameraman and the police, and also the driver who alleges that he had given rupees 500.
Well, this is something which must be looked into by the department concerned and action taken if found true. There are no two opinions. Now, as far as multiplicity of authorities are concerned, you see, as far as the entry of trucks, now, if somebody tells me that trucks alone are the major polluters, then I am not prepared to agree. But since the ban has been there, not Sir, to this let is not about Mr. Kakkar, this is not about trucks alone. It's about the fact that construction is taking place. It's an order given by the Supreme Court which is being violated. Just one minute. Sir. Rahul, 1 minute. Rahul, 1 minute. Now trucks, as it is the MCD and the police. MCD has nakas and police is also there. It is primarily it should be their responsibility. Now secondly, about the construction taking place all over, I wonder if the Delhi police can do anything to this. It is the responsibility of the pollution board of Delhi and the other authorities, whether it's the MCD or the NDMC or the administration, because they alone can find them, they alone can stop them, and this is where it is. But entry definitely, but because there is multiplicity of authorities, nothing is taking place. I fully agree with your assessment report and assessment that the Aam Aadmi Party is throwing back on the corporation, and the corporation, the ruling party is throwing back on something else. Rules are perfectly all right, okay, but who is going to implement them? And we have seen it again and again that not only in this, in any other case where the Supreme Court mandate is there, we file, there is a committee, the report, and the affidavits are filed. But on the ground, nothing is happening. I mean, everything that should happen is not happening. I will correct my statement. Everything that should happen is not happening because there is scope for evasion and with the collusion of the authorities. That's all that is there. Jyoti Pandey Lavakare, there's a case in the Supreme Court. There are clear Supreme Court guidelines, and not far from the Supreme Court, they are being flagrantly violated with no care in the world. What do you believe immediately needs to be done to ensure that guidelines laid out by the Supreme Court are actually followed? And I hope to all my gods that the judges of the Supreme Court who are responsible for this case are watching and seeing how their orders and instructions are being violated in the capital. Jyoti. So this is nothing new, actually. This is something that we all know happens all the time, thanks to the India Today special investigation and Nitin's sitting out in the polluted, cold Delhi. Now the rest of the country is seeing it. But this is also not the first time that the Supreme Court's guidelines have been violated. The Supreme Court had banned all but green firecrackers, but we know what happened. Firecrackers were being burst with gay abandon, and no one was actually taken to task over that. Stubble has been burnt. It's not supposed to be burnt, but no one is taken to task for that. So the Supreme Court just, unfortunately comes up with these guidelines and orders, but the enforcement, which is supposed to be done by the central and state government and all the local bodies, is of course not being done. And who is paying the price? You and I and the people living in Delhi. And actually not just Delhi. You have just seen one slice of this. If the same thing was, investigation was carried out in Uttar Pradesh, where there is the same state and central government, or Haryana, you will find the absolute same thing. And then who will they be able to blame? I mean, right now they are blaming Aam Aadmi Party and BJP are blaming each other. Please do the same thing in Uttar Pradesh and Haryana, and you'll find even more. Currently, crop stubble is burnt, firecrackers are burst. You see, it will happen again. And not just that, when you have these construction sites with these large metal scaffolding, which are supposed to be there actually to stop the dust from coming out, really what's happening behind those metal scaffolding, no one knows. There is nothing written out there. Who is making this building? For what reason is it being made? Who is the person one should get in touch with? Who is accountable? What number should a citizen call if they see flagrant violations like this happening? None of that is done. Let me ask Reena this question. You've now been part of this investigation.
You've seen what we've played out, so you can't claim you don't know what's happening. Tell me, after this investigation gets over, what will you do? Will you make the effort of calling up Chief Minister Kejriwal, his deputy Manish Sisodia, telling them that this is what the India Today team just found, we need to do something about it? What action do you promise on behalf of your party and your government, Reena? Rahul, please allow me 10 seconds to explain this problem properly. We are focusing on the wrong issue here, Rahul. I study air pollution day in and day out, so allow me to explain to you. 70% of the pollution in Delhi actually originates from outside Delhi, Rahul. So unless you Ma'am, you're on a different issue. It's almost like you're tone deaf. You're not listening to what I'm saying. I'm saying at night, there are 200 plus trucks. Just respond to the. You're on my show. You want to run a show? You're welcome to, right? I'm asking you a direct question. You've just seen how hundreds of trucks are engaged in construction activity at night under your nose in a violation of Supreme Court guidelines. You claim to care about the environment. On the back of the show, what are you going to do as a representative of the AAP government in Delhi? What can you promise, ma'am? Rahul, a team will go to this site tomorrow itself. Why not tonight? But that's not the point. Why tomorrow? Why not tonight? Okay, tonight a team will go, but that is not the point. We are focusing on the wrong issue. If 70% of the pollution is originating from outside Delhi, construction constitutes less than 8% of the pollution out of the 30%. Less than 8 of that. But you're not interested in enforcing the guidelines because you're claiming that this is the wrong. It's one. First and foremost, I'm not saying it's the only issue. Secondly, it's happening on your watch. It's inconvenient and embarrassing. Therefore, you're blaming what's beyond your control. You don't run Uttar Pradesh. You don't run Haryana. Therefore, you're saying that's to blame. What you can control and enforce, you're not looking to do. Look at how lethargic your response is. Kal jayenge ji. Kya kar raha hai boss? Kal jayenge ji. Look at that. You're not even taking responsibility for what's happening on your watch in your chief minister's own constituency. I have taken responsibility. What else do you want me to do? I am taking responsibility. The Delhi chief minister is the only person who actually is doing something about pollution. He tweets the AQI on a daily basis. Does Yogi Adityanath even understand what air quality index is, Rahul? So please, you know, the Supreme Court has recognized that Delhi government is the only government in the NCR. उसको ये कॉग्निजेंस नहीं लेना चाह रहे, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। अच्छा विजेंद्र जी आप बताइए, विजेंद्र जी, ओके फाइन, विजेंद्र जी मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आपने ये इन्वेस्टिगेशन देखी, इसके बाद अब आप क्या करेंगे? आप दिल्ली में बड़े कम बीजेपी के एमएलए हैं, आप उनमें से एक हैं, अब आप क्या करेंगे ताकि इस पे कुछ एक्शन हो? आपसे एग्री करता हूं, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन बड़ा होपलेस रिप्लाई आया है कि कोई कॉग्निजेंस लेने की तैयारी नहीं है जो हो रहा है। इसका मतलब ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सर आप क्या करेंगे? वो उनको छोड़िए, गवर्नमेंट उनको जनता देख रही है। ब्लेम गेम करेगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि इस सारे इशू पे इसमें कोर्ट के सामने ये सारी सिचुएशन रखी जानी चाहिए और कोर्ट को इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। सर आप भी तो एनवायरमेंट मिनिस्टर को फोन कर सकते हो, अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर को फोन कर सकते हो। विजेंद्र जी आप जो कर सकते हो उतना तो कर दो। आप जरा फोन कर लीजिए हरदीप पुरी जी को, आप जरा फोन कर लीजिए भूपेंद्र यादव जी को, बोलिए कि सर ये चल रहा है, नाक के नीचे चल रहा है, इसका कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को इसको कॉग्निजेंस लेना ही चाहिए। सर आप तो कॉग्निजेंस लीजिए, जो मिनिस्टर्स आपकी पार्टी से हैं उनको तो फोन कीजिए आप। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मीटिंग तक नहीं बुलाई। Have you seen one statement from the environment minister or the prime minister on air pollution? लेकिन ये जिस तरह बोल रही है सरकार दिल्ली की, वो शर्म की बात है। You know, Reena Gupta, the primary problem with your argument is you are not taking responsibility for what's happening under your watch, on your watch, under your nose, in your chief minister's constituency. You're looking to blame people who are outside your control. पहले अपना तो ठीक करो ना, then try and figure out what's not in your control, and you can try and raise a public outcry about that. I do expect, Vijendra Gupta, that you will make the calls, try and at least stop what's been found, because this is a blatant violation of Supreme Court orders. I'm also hoping that the Supreme Court judges who are hearing this case will look at this India Today special investigation, ask us for the tapes, which we will provide the raw, unedited investigation to them, and they will then pass orders, act against the officers, and enforce their own directives. Otherwise, it's just a joke. It's blowing up in smoke
we're choking, we're dying, and the AAP and the BJP are busy blaming each other. The only person who did his job properly here is Nitin Jain from our investigation team. Everybody else just trying to pass the buck. Thank you for joining us. We will track this story very closely and see what happens next.